वेलकम बैक स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, सब ठीक। गुड, नाइस टू सी यू अगेन। सो लेट अस वेलकम यू in e-class again. We are going to start with lecture 4 today. So it is lecture 4 going to be started. Lecture 4, this is related to opening capital. Already we have discussed about the two types of capital. What are those capital, bache? That is fixed capital, and another one is fluctuating capital. In the fixed capital, we have discussed that there is need of two accounts. First account we used to prepare, that is partners capital account. Second account in the fixed capital we used to make, that is partners current account, right? In the capital account, we have discussed that there should be opening balance of capital, which will be put on the credit side of capital account. By balance brought down, that is done. Then, if any additions to the capital is there, that should be put on the credit side in the capital account by writing by cash or bank. We know that. Then, if anything is withdrawn out of capital only, that should be put on the debit side of capital account when the capital is fixed. Then difference of these two sides, that is credit side over the debit side, that is the closing balance of capital. When the capital is fixed in the partner's capital account, the capital will always be positive. That means it always shows a credit balance, right, Peter? Again, we have discussed that when the capital is fixed, we make partner's current account. Straightway, we also have the balances in the beginning of current account too. Thereover, we have two balances. It may be the positive balance, it may be the negative balance. Positive balance means when the balance of current account is credit balance, right? That is positive balance. When the balance is of debit, that means that is a negative balance. So it may be both. If it is positive balance, you will write in the partner's current account by balance brought down. If it is negative balance, you will write down to balance brought down. Overdrawn भी है और अगर positive है तो by balance brought down. You will have one thing out of these two. Then various adjustments about the partner's salary, interest on capital, commission, his share of profit in profit and loss appropriation account, all that is to be put on the credit side. When the capital is fixed, we need to make partner's current account. All the various adjustments will be put on the credit side, which is to be given to the partner. Something which is withdrawn by the partner, that is drawings. Drawings which, that is out of profit. कैपिटल की ड्राइंग्स है वो हमने कहाँ दिखाई? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. अगर ड्राइंग्स आपकी प्रॉफिट में से हैं, दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. टू ड्राइंग्स, to interest on drawings, to profit and loss account, that shows the loss. So definitely at the end it will be total of this side, total of this side. If difference comes on this side, it will be two balance. Carry down shows a positive balance. If it is more of this side, less of this side, the balance will be put on this side by balance carried on. That shows debit balance, negative balance. So this we have discussed in the previous lecture, right? How to make capital account, partner's current account when the capital is fixed. Then there is another topic we have discussed, when the capital is fluctuating. When the capital is fluctuating, we have the difference, that is fixed and fluctuating over there. We have discussed that when the capital is fluctuating, only one account is prepared, that is partner's capital account. When the partner's capital account is prepared in fluctuating capital, it will be started either from this side or from this side, because it may have positive and negative balance. By balance brought down to balance brought down. Various adjustment will be put on the credit side, whatever is to be given to the partners, like partners interest on capital, partners salary, partners commission, profit and loss appropriation account. Then on debit side, we used to take two drawings. Drawings may be out of capital, drawings may be out of profit. Both the drawings will be taken over debit side of partners capital account when the capital is fluctuating.
Then profit and loss account, if it is a loss. So that way again there will be difference of two sides. If the difference comes of this, it will be two balance carried down showing the positive balance. If it is this side, it will be by balance carried down, that shows the negative balance. What it means, when the capital is fluctuating, the capital may be positive, the capital may be negative, even at the beginning point, even at the end point. So this is clear. Already we have discussed. So this is one of the recap. Then related to that topic, we know that whatever interest on capital is required to calculate, for that the interest on capital needs opening capital, because whenever interest on capital is calculated, it is always calculated on the opening capital. Closing पे नहीं होती बेटा, ओपनिंग कैपिटल. क्यों? क्योंकि जितने मंथ कैपिटल लगेगी बिजनेस में यूज की जाएगी, उतने ही मंथ का इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा. सो हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, राइट? देयर इज वन फॉर्मूला, आई जस्ट राइट डाउन. Capital at the end, that is closing capital. Amount will be here. Add drawings. It may be out of capital, drawings out of profit. Right, beta? If nothing is given, it is always out of profit. Less additional capital introduced during the year. During the year. So this will give you amount of opening capital. Clear है बच्चे? I'll just repeat the again. Opening capital needs to calculate interest on capital. If sometimes it is not given as opening capital, it is given as closing capital, drawings की amount दी हुई होती है, profit की amount दी होती है, तो we need to adjust all that. So capital at the end, drawings out of capital plus drawings out of profit, that will be added, less even profits. Profit during the year, that should also be minus. Less additional capital if it is introduced during the year, that should also be minus. By that you will be able to calculate opening capital of the partners. Clear? Now we have two types of capital account, fixed and fluctuating. In both the capital account, we will just see what is the formula of calculating opening capital. This is the nutshell formula which will be applied in both. So let us see one by one. We will start with the fixed capital. Opening capital when capital is fixed. I'll try to clear it with the help of capital account first. आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी सीखा हुआ बेटे, हम उसी से क्लियर करेंगे इसको. ये होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट when the capital is fixed. This is your debit side, this is your credit side. Putting the amount both on debit and credit. So always started with the credit side. You will write here by balance, brought down, तो ओपनिंग बैलेंस. ये चीज हमने निकालनी है, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं हम? बाय कैश और इवन बैंक अकाउंट. यहाँ पे हम लिखते हैं टू कैश ऑब्लिक बैंक, राइटिंग डाउन द
drawings out of capital. Then left out is the closing balance by to balance carried on and total of 2 sides. This already we have discussed. Clear है बच्चे? अब इसी को हम देखेंगे कि हाउ वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल अगर आपका कैपिटल अकाउंट ये दिया हुआ है. ये क्लोजिंग कैपिटल है. इसमें अगर हम ड्राइंग्स ऐड करें आउट ऑफ कैपिटल वाली, एडिशंस ड्यूरिंग द कैपिटल माइनस करें तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चे? ओपनिंग कैपिटल. अब इसी को मैं फॉर्मूला में लिख सकती हूँ. बट आई विल राइट क्लोजिंग कैपिटल प्लस drawings out of capital minus addition during the year is equal to what? That is opening capital. Clear है बच्चे? So what we have done, we need to find out the opening capital. There are two types of capital we have discussed, fixed and fluctuating. When the capital is fixed, we have to make partners capital account first. In the capital account, we write opening balance, we write additions during the year in cash, we write withdrawal from the capital, just having the closing capital. अब मैंने इसी को फॉर्मूला में लिखा, मैंने लिखा और अगर हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग है, हम क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ऐड किया, माइनस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर माइनस किया, रह क्या गया हमारे पास बच्चे? ओपनिंग कैपिटल. तो अगर कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, वी हैव ओनली दिस मच फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड. क्लियर? क्योंकि हमने क्वेश्चंस करने हैं, सो वी नीड टू फाइंड आउट वेयर वी हैव fixed capital and fluctuating capital, the value of opening capital. So you must have better understanding when the capital is fixed, this is the formula only, that is closing capital plus drawings out of capital minus additions during the year made is equal to opening capital of the partner. Now we will see the next, that is opening capital calculated when the capital is fluctuating. So this way you will have better understanding कि हमने कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा था, क्या ऐड करना और क्या माइनस करना है. So opening capital when capital is fluctuating. Again we will make in partners fluctuating capital account, we have only one account, that is partners capital account. All the various adjustments are there only. Partner कैपिटल अकाउंट. यहाँ फ्लक्चुएटिंग का डिस्कस करने लगे बच्चे. मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी ताकि बोर्ड में पूरा आ जाए. हम एक ही पार्टनर का एग्जांपल लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. सो पर्टिकुलर्स this is the golden time with you in the lockdown period that we are able to have the things in the class, like जो हम क्लास में करते हैं बेटा वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को कंसर्न लगे कि हम अपनी क्लास में ही बैठ के सारी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है ना? तो कई बार ये होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्पेशली आई फील इट इज रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी ऑन द बोर्ड हैव समथिंग एज ए वर्किंग ऑफ द सब्जेक्ट. So we are started with the partners capital account. When the capital is fluctuating, we used to start with the by balance brought down. It may be to balance brought down. One of the thing will be given either negative or positive. So already we know all the various adjustments like interest on capital. जितनी भी appropriation हमने P&L appropriation account में की, जो partners को मिलती हैं, always it is to be credited by salary or it may be commission, it may be profit or profit and loss appropriation account. Then this side we have
two drawings. Now you must be clear कि drawings may be out of capital. It must be clearly mentioned in the statement. लिखा होगा कि capital में से है. अगर कुछ भी नहीं लिखा हो, that is always out of profit. So we may have drawings out of profit. दोनों इधर आएंगी. We may have loss of profit and loss. Appropriation account, that is loss if it is there. Right, beta? If anything is made as an addition during the year by cash or bank additions made during the year, then definitely we will have to balance carry down, or it may be by balance carry down. अगर अब इसी को हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ, फिर हम लिखेंगे अगले उसमें. We will start with the closing balance. This is the closing balance. Closing capital plus loss during the year plus drawings out of profit plus drawings out of capital minus additional capital minus profit if it is there minus salary and commission of the partners minus interest on capital given. Interest on capital तो निकालना है ना हमने, तो ये हम नहीं लिखेंगे. It is to be calculated. Then what will be the result? That will be the opening balance of capital. So this is the way when the capital is fluctuating, we will just start it from the closing balance, add all the various debit amounts minus all the various credit amounts. You will come out with the result, that is the opening balance of capital. Clear, students? So ये तो था how to calculate the opening capital. So I will just going to solve at least two questions of the capital account, that is when capital is fixed and when capital is fluctuating. So I am having T.S. Gariwal with me. I just give you the page number, sending the pics also, so that it will be easy for you people to understand whatever we have discussed on the board today. So shall I start with the questions now? Actually, we have a big topic, that is fundamental. It is of 10 marks. So it will take a lot of time. At least already we have started with 2-3 weeks and it will take more 2 weeks. So that way you have enough time, because it is the beginning of your +2. So that way I don't want to overburden you people with the number of things. I'm just having the things bit by bit, one after other, having with number of solutions with you, so that you must be able to understand. Still, if you feel it is difficult for you people, you may come with your queries too. Right, beta? So let us start with the question. I'll see at the back in the exercise only. Specs लगाना बहुत जरूरी है ना. Without specs, it is not easy to read the statement clearly. It is very much blur for me. So I'm going to start with question number 21 of your book at page 2.82. So let us write here question number 21, page 2.82. I'll just read the statement first, make you people understand that, then we will start with the solution. Kamal and Kapil, they are partners having fixed capitals of 5 lakh each. So when the word fixed capital it is written, it is very much clear that we have to put the entries through current account. Clear है बेटे? अगर ये fixed word ना लिखा होता तो सिंपली हम प्रॉफिट वगैरह किस में डालते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. बट एज इट इज मेंशन्ड दैट इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल, सो वी हैव टू पुट द प्रॉफिट्स, all these things, interest on capital, in the partners current account. So I just show you how to do it. So Kamal and Kapil, they are two partners having capitals of 5 lakh each on 31st March 2019. That is in the beginning, because we have 31st March 2020 as the closing period.
Kamal introduced further capital of 1 lakh on 1st October 2019. So Kamal, first partner, he has given more additional capital, 1 lakh rupees, when it is given 1st October 2019 after 6 months. And Kapil withdrew 1 lakh on 1st October 2019 out of capital. So it is mentioned out of capital. Drawings out of capital will be given. अगर silent है तो इसका मतलब ये out of profit है. So two partners, Kamal, he has introduced 1 lakh on 1st October 19. On the other hand, Kapil, again another partner, he has withdrawn the amount out of capital 1 lakh on the same date. Interest on capital to be allowed 10% per annum. तो ये given है कि 10% जो देना है, that means it is agreed upon. The firm earned net profit of 6 lakh for the year ended 31 March 2020. फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है, एडिशंस और विड्रॉल भी है. ठीक है. पास द जर्नल एंट्री, ओनली वन एंट्री और टू एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ इसकी देनी है बेटा, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. क्लियर. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. Kamal and Kapil, two partners. I think statement is very much clear to all of you. So we will just start with the working notes first. Working note in accounts, it is very important. Without working note, examiner will not understand your working, your solution. So we will start with working note first. Two partners name, Kamal and Kapil. Right? Now what is given? That is their opening capital. We need to find out the capital interest. For that we have capital as on 31st March 19. It is given 5 lakh each. Both the partners having the same fixed capital. Clear है मुझे? Then additions are made during the year. So first of all we do interest on capital up to 1st October 2019. क्योंकि 1 अक्टूबर 19 तक तो उसकी कैपिटल कितनी रही बच्चे दोनों की 5-5 लाख. हम पहले इसका इंटरेस्ट निकालें. 5 lakh, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. कितने मंथ हो गए? 31 मार्च मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. 1st अक्टूबर तो है ही है. 6 months. The money used for 6 months. So for first 6 months, interest comes out 25,000. It will remain same for other partner. दोनों की सेम है बच्चे. 10% into 6 by 12, 25,000. Then we have capital as on. अब capital change होगी. Capital as on 31st March 2020. That means from 1st October 19 to 31st March 20. कितने हो गए बच्चे? He has introduced 5 से कितना हो गया? 6 lakh capital. रेट 10% ही है. अब अगले 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months more. Now what is the interest amount? 6 5 are 30,000. इसका कितना आएगा बच्चे? 5 lakh इसकी 1st अक्टूबर 19 तक थी. इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ कैपिटल. अब इसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 4 lakh rupees. Rate is 10%. Number of months used 6 months. 5 4s are 20,000. So if we find total interest of both till 31st March 2020, 25 plus 30, 55,000. 25 plus 20, 40,
5,000. So this working note, it is very important. Without this, you cannot solve the work. So this is Kamal and Kapil. Capital in the beginning, 5 lakh each. Introduced during the year, that is 1st October 19. That means 1 अक्टूबर 19 तक उसकी कैपिटल 5 लाख की रही दोनों की. We have calculated interest for 6 months. 25,000. Then he has introduced, Kamal and Kapil both have introduced as well as withdrawal. कमल इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर 19 को 1 लाख रुपया. 5 + 1 6 लाख. अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया? 30,000. इसलिए 5 लाख की उसमें से 1 लाख विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को. इसकी कैपिटल कितनी रहेगी बेटा? 4 लाख. तो इसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 6 मंथ का 20,000. 25 + 20 45,000 एनुअली. 25 + 30 55,000 annually. Now we will just have the entry, then profit and loss appropriation account as per the demand of the statement. Now journal entry we have. उसने एक एंट्री बोली है, हम इसको दो एंट्री बना सकते हैं, एक एंट्री बना सकते हैं. पहली एंट्री क्या आएगी बच्चे? 31 मार्च 20. This is particulars, ledger folio, debit and credit. Over here it is date. So 2020 March 31. First entry always we have through partners capital account. We are talking about the fixed capital account. That means the entry will be put in the current account. पार्टनर के करंट अकाउंट में किस साइड हुई एंट्री? क्रेडिट साइड. तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. क्लियर है बच्चे? वी हैव टू पार्टनर्स. एक ही कैपिटल का इंटरेस्ट कितना आया था बच्चे? 55,000. दूसरे कितना आया था? 45,000. So you may write 1 lakh. और बाय नेम भी लिख सकते हैं के एंड कपिल एंड कमल. 55 यहाँ पे लिख सकते हैं टू कमल्स करंट अकाउंट 55,000, टू कपिल्स करंट अकाउंट 45,000. वो भी सही है, ये भी सही है. Then same date we have another entry in profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account debited. Which account should be credited now? Capital interest account. It is again 1 lakh. अब इन दोनों एंट्रीज की जगह में एक एंट्री दिखा सकती हूँ बच्चे कॉमन. एज ही सेड पुट द जनरल एंट्री. और अगर आप देखें जैसे मैथ्स में प्लस माइनस कैंसिल होता है, वी नो इट इज डेबिट एंड क्रेडिट कैंसिल. कैपिटल इंटरेस्ट डेबिट, कैपिटल इंटरेस्ट क्रेडिट. तो ये एक तरह से कैंसिल हो गया. व्हाट इज डेबिटेड? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और क्रेडिट में क्या रहेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो हम एक एंट्री दिखा सकते हैं. क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account debited. Name of the partner Kamal. Current account as the capital is fixed to Kapil current account. Total amount it is 1 lakh. 55,000 interest on Kamal's capital. 45,000 interest on Kapil's capital. तो या तो हम दो एंट्रीज में दिखा सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि पुट द जनरल एंट्री. तो हमें ये वाली एंट्री दिखानी है. दैट इज पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट एंड कपिल्स करंट अकाउंट. क्लियर हो गया बच्चे? ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है, इंटरेस्ट कैसे निकालनी है, और
साथ में हमें उसकी एंट्रीज को कैसे दिखाना। सो वी विल जस्ट हैव द सेम क्वेश्चन नाउ विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट है ये, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे खत्म करेंगे। There are a number of questions in the exercises. You have to do it yourself, Ajay. Wherever you feel any problem in solving the sums, you may just take the help of the various examples given in the theory. Okay. Now, the same question, we will just make profit and loss appropriation account. जो स्टेटमेंट में बोला जाए वही बनाना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, ये हमने लिखा ही होता है, for the year ended given 31st March 2020. Debit and credit amount particulars. So started with the credit side by writing by P&L account how much profit it is given the question. It is worth rupees, question number 20, 6 lakh. Right, madam? Simply we have capital interest, nothing else. कौन कौन है? कमल and Kapil. It is 55,000. It is 45,000. Put line. It will be outer column 1 lakh rupees. Out of 6 lakh, 1 lakh it is already appropriated in interest on capital. How much amount is left? 5 lakh. Then we need to distribute among between two partners, Kamal and Kapil. So what will you write? To profit transferred to, अब करंट अकाउंट लिखना है बच्चे क्यों, कैपिटल फिक्स्ड है, टू कमल करंट अकाउंट, देन कपिल करंट अकाउंट। तो अगर हम देखें 5 लाख को डिवाइड करें, रेशो कोई गिवन ही है, देन शुड बी 1:1, 1/2, 2,50,000 ईच, इक्वल होती है। Profit sharing in the absence of partnership deed. So this is the way we have to make profit and loss appropriation account. Clear everyone? So this is question number 21 in your book in TS Kariwal we have solved. Now we will just take one question from fluctuating capital. तो हमने fix कर लिया था, अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग का। Quite clear to all the students? Now let us do one more question because I know that at least one question must be solved for you people to have a better understanding of the topic we have discussed. There are a number of questions. I know that there is a lot of work for you people to solve it yourself because now you are the senior most students. So it is almost the practice from the previous class plus one that we know that the maximum work is to be done by you people at home. अब तो आप घर पे ही हैं, कोई इशू नहीं है, सारा दिन सारी रात आपकी है, खेलो कूदो एंजॉय करो, खाओ पियो, ठीक है, पेरेंट्स की हेल्प करो, एंजॉय करो, इंडोर गेम्स, आउटडोर तो पॉसिबल ही नहीं है, मोबाइल का यूज करोगे तो सिर्फ इसी स्टडीज के लिए, अदरवाइज रेस्ट ऑल द डे शुड बी ऑन द सेपरेट साइड। क्लियर बच्चे? So make your timetable, have your planner yourself. You people are the best guide of your own. किसी को जरूरत नहीं, आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हम लोग आप लोगों को समझाएं कि बेटा ये करना है या वो करना है। तो आई थिंक पीपल आर क्वाइट जीनियस, राइट? जीनियस को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। So let us continue with another question that is from fluctuating. That is question number 25.
I'll read the statement, this question, then we will just make the solution on the board. I'll just send you a copy of the solution to have a better understanding, right? So question number 25, page 2.83. Now what is the statement given, bache? Naresh and Sukesh, they are partners with capital of 3 lakh each on 31st March 2020. Naresh had withdrawn, ध्यान सुने, Naresh had withdrawn 50,000 अगेंस्ट कैपिटल. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नरेश ने 50,000 किससे निकलवाए हैं? कैपिटल में से. तो ये कैपिटल अकाउंट में शो होते हैं. ऑन 1 अक्टूबर 19 एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. नरेश ने ही 1 अक्टूबर को 50,000 तो कैपिटल में से निकलवाए. इसका इफेक्ट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आएगा ही आएगा. और 1 लाख रुपए उसने आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी विड्रॉ किए हैं, राइट बेटा? देन सुकेश आल्सो हैड ड्राइंग्स ऑफ 1 लाख. सुकेश का सिंपली दिया हो कि उसकी भी ड्राइंग्स क्या है? 1 लाख रुपया. अगर कुछ भी ना दिया हो तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम. दैट मीन्स इट इज टू बी गिवन. ये प्रोविजन है, देनी ही पड़ेगी आपको, अलाउ करना ही पड़ेगा. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रॉफिट साल भर का कितना है? 2 लाख रुपया. तो आपको क्या करना है? इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज दिखानी है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी भी एंट्री दिखानी है. क्लियर है बच्चे? सो लेट अस स्टार्ट. अगेन वी विल स्टार्ट विद द वर्किंग नोट फर्स्ट, राइट? सो यू नो दैट. अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, कैपिटल इज गिवन ऑन 31st March 2020 3 लाख ईच. तो ये ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं. अगर ओपनिंग कैपिटल होती 31st March 19 होता है या 1st April 20 होता. 31 मार्च 2020 का मतलब है हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है. क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, उनकी ड्राइंग्स दी हुई है. तो ये सब चीजें लेके हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल. इफ यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग वी हैव स्टार्टेड हाउ टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल. So to find out opening capital, we will just have first working note. It is part of solution, very much important. Opening capital. Name of the partners are Naresh and Sukesh. Right? So first of all, we will take the capital, that is closing capital. Which is as on 31st March 20. कितनी दी हुई है? 3 लाख ईच दोनों पार्टनर्स की. Right? Then he said drawings out of capital plus drawings out of capital. Drawings added किए. It is 50,000 for Naresh. Sukesh की कोई नहीं है, right? Then he said कि drawings out of profit वो भी ऐड करेंगे. One lakh of Naresh and 1 lakh of Sukesh. So what we have find out? This is the value of opening capital. इसकी कितने आगे बचे? 4,50,000 and here we have 4 lakh rupees. Clear? This thing Naresh and Sukesh given opening capital is to find out. Closing दी हुई है 3 lakh each. दोनों की ड्राइंग्स है, एक की आउट ऑफ कैपिटल भी, एक की आउट ऑफ प्रॉफिट भी है. जैसे जैसे दी हमने उसको ऐड बैक कर दिया और कुछ नहीं दिया हुआ तो हमारे पास क्या आगे बचे? ओपनिंग कैपिटल 4,50,000 एंड 4 लाख.
4 लाख इसकी कैपिटल है, इसकी आउट ऑफ कैपिटल कोई ड्राइंग्स नहीं है, दैट विल नॉट अफेक्ट एट ऑल. सो वी विल जस्ट फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate given, that is 10% per annum. यहाँ पे तो आप सिंपली 4 लाख इंटू 10 over 100, राइट, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल उसकी ड्राइंग्स है ही नहीं. सो दैट मीन्स इट इज total amount of interest 40,000. But here in this case 4,50,000, this is the opening capital. 1 अक्टूबर 19 को आउट ऑफ कैपिटल उसकी ड्राइंग्स हुई थी 50,000. इसका मतलब उस पीरियड तक 6 महीने के लिए 4,50,000 का इंटरेस्ट निकालेंगे 10% फॉर 6 मंथ, प्लस बाकी कितनी रह जाएगी 4,50,000 में से. अगर हमने 50,000 की ड्राइंग कर ली तो कैपिटल कितनी रह जाएगी बच्चे 4 लाख. दैट इज 1 अक्टूबर 2019. तो पीछे फिर क्या रह जाएगा 6 मंथ टिल 1 अप्रैल 2019. तो दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा उसको प्लस करके हम निकाल लेंगे. इसका फाइंड आउट करो. 22,500 and 20,000. That means 42,500 and over there it is 40,000. Clear hai bache? This is how to find out the capital interest when the capital withdrawals and withdrawals out of profit it is given. We need to add back. So interest on capital निकालते वक्त हमने capital की drawings नहीं है तो हमने full fledged annually ले लिया और यहाँ पे हाफ ऑफ करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ऐड करके दोनों का एनुअली इंटरेस्ट आ गया. नाउ वी विल सी हाउ टू पुट द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस. Do remember the amount of interest 42,500 and 40,000. Journal entry. Only interest on capital. कोई नहीं दिखानी. And distribution of profit. ये दो एंट्रीज दिखानी है बच्चे. Date, particulars, folio, debit and credit. स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, पढ़ते जाइए और उसका सॉल्यूशन करते जाइए. इट विल बी इजी फॉर यू पीपल. Now, first of all, we have 31st March 20. That is interest on capital. We have it is 31st March 20 interest on capital 42,500. You will write here profit and loss. Appropriation. APP stands for appropriation account debited. कौन सा पार्टनर है नरेश एंड सुकेश. So to Naresh capital account and to Sukesh capital account. $42,500 already we have calculated. 40,000 for other partner. That means total interest 82,500. Clear with it? Then another entry we have to put, that is about sharing of profit or loss. Now this is the amount of appropriation. Total profit कितना दिया हुआ है हमें 2 lakh. I just show you working note. Net profit 2 lakh less interest on capital 82,500. Divisible profit DP, divisible profit 1,17,500. This is the divisible profit left. अब 1,17,500 को उसने किस रेशो में कहा बांटने के लिए. क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग. इट विल बी इक्वल. So that means another entry
profit and loss appropriation account डेबिटेड. कौन कौन से पार्ट में बचे? नरेश कैपिटल अकाउंट, सुकेश कैपिटल अकाउंट. So total amount of divisor profit 1,17,500. So if it is not given, इसको अगर हम half करें, divided by 2, 58,570, 750 sorry, each. So this is about this question. I feel it is very much clear. This is a remand of the question and we have done it. So today we have discussed how to calculate the opening capital when the capital is fixed, when the capital is fluctuating, with the both ways, with the format that is making of capital account and making of capital account with fluctuating. उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया फॉर्मूला के फॉर्म में ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. Then we have discussed if the opening capital is there, we need to calculate interest on capital because it is always calculated on opening capital. Sometimes it is given in the question opening, otherwise sometimes it is given as the closing. This is question हम देखा कि capital on 31st March 20 दी हुई है, आपको profit दिया हुआ है, आपको drawings out of capital दी हुई है, आपको drawings out of profit दी हुई है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर ये लिखा नहीं हुआ कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या प्रॉफिट है, इसका मतलब वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही है. राइट बेटा? तो with that we have better understanding how to make the journal entries of interest on capital by calculating opening capital. Then division of profit, that is profit and loss appropriation account adapted to both the partners capital account. क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ लिखा हो कि whether capital is fixed, it is understood that it is a fluctuating capital, so we need to put the entry for profit through capital account only. तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया होता, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वो भी पता है कि इट इज ऑलवेज 1:1, दैट इज इक्वल शेयरिंग रेशियो. सो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत ज्यादा नहीं करते हम ताकि आप लोग बर्डन ना लो, धीरे धीरे करते जाएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे. और मैं आप लोगों को इसकी पिक भेजूंगी क्वेश्चंस की, और जितने आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चे. इट इज गिवन आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस ऑफ बोथ द टॉपिक्स with opening capital and interest on capital. So solve that. I'll just send you the answers after in the next lecture. So have a nice day and take good care of your health. Bye bye.